Hello everyone, myself Deepak Gupta, logging again on this platform of College Dekho Learn, and we will today take up the topic of dishonor of the Act Negotiable Instruments Act 1881 of the overall paper business law. And in this concern, this dishonor of negotiable instrument, as we have discussed, that primarily we will have three kind of negotiable instruments, that is bill of exchange, that is promissory note, and that is check. So when you are a holder of any of the three negotiable instruments and when they are mature, that is they are ready to be encashed, then they are to be presented. So normally before any negotiable instrument is to be paid, a formality required is their presentment. And this presentment is normally defined or classified in three ways. And when we understand the meaning of the word presentment, then we will carry forward to understand the meaning of this word dishonor. So before we move on to dishonor, let's understand the meaning of the word presentment. As you know, that promissory note has to be made by the maker and that maker is liable to pay. So there is no question of any acceptance to undertake the liability. Similarly, checks are always drawn which are having a prepaid acceptance. So there is no need of any acceptance on a promissory note or check. But whenever we talk about bill of exchange, then they are drawn by the person who has given you the goods. So he is having a right and ask the payer, that is the person who has undertaken the goods, that he accepts his liability to pay for the goods or the services that has been received. So the person who has been ordered, that is the word drawee. So what happens in a bill of exchange? Drawer makes the bill of exchange and orders the drawee to undertake the responsibility to pay because he has received the goods. So there is always a question of acceptance. And when the drawee makes the acceptance, then he becomes liable. So this word presentment is normally dealing that whenever there is a bill of exchange, then such bill of exchange always needs to be presented for acceptance. And only after this bill of exchange is accepted, it becomes a valid bill of exchange, valid negotiable instrument. Then thereafter it is presented for payment. So if somehow again repeat, this drawee fails directly or indirectly to accept the liability on such bill of exchange, or when there is a presentment for such acceptance on behalf of the drawee, there is some kind of default and therefore there is no acceptance, or we can say the presentment for acceptance fails, then we can always say that the negotiable instrument has been declined by non-acceptance, and this non-acceptance is known as dishonor. So this dishonor of negotiable instrument can be by non-acceptance, and it is specifically written here that this dishonor by non-acceptance can only be for a bill of exchange. So we will first discuss this dishonor by non-acceptance, which is applicable only for bill of exchange. And once we are done with this, then I will explain the dishonor by non-payment, which can be applicable for bill of exchange as well as promissory note or check. So when we talk of this dishonor by non-acceptance, it is clearly now been told to you that this will be applicable only for the bill of exchange, because the other negotiable instruments, promissory note and check, they don't require any acceptance by the drawee. Okay? And therefore we can say that a bill of exchange will be deemed to be dishonored by non-acceptance if such bill, even after presented for payment, is not accepted for liability even after 48 hours of valid presentment. Or if there are various drawees and all of those drawees are failing, no one of the various drawees, multiple drawees if are there, and no one of the multiple drawees or all of those drawees have failed to accept the liability on such bill of exchange, and we will say that such
bill of exchange has been dishonored by non-acceptance. We can also say that if the party, that is a drawee to which such a bill of exchange was presented, is incompetent, that is, there is always a party which is signing the contract, and as per the contract, it must be competent to contract. We have discussed it in our earlier sessions on competency to contract. And if the party, that is the drawee, which has been asked to accept, is incompetent, so if the drawee is incompetent, then irrespective of the fact whether he is accepting the bill of exchange or not, then such presentment to an incompetent drawee will deem the bill of exchange dishonored by non-acceptance. Also, we have discussed earlier that there cannot be any kind of conditional acceptance. That is, it has to be a unconditional promise or unconditional order. Similarly, when the drawee makes an acceptance, either it has to be an unconditional acceptance, unqualified acceptance, or it can be a no acceptance. So if the drawee makes a qualified acceptance, then effectively he is declining the liability and we presume it to be dishonor. So no qualified acceptance will be deemed as acceptance, and hence such qualified acceptance by the drawee will be deemed as dishonor of the bill of exchange by non acceptance. ठीक है. इसके अलावा कई बार क्या होता है कि भाई जो जो ड्रॉई है हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन हम उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रहे, यानी कि हम अपने ड्रॉई को जिसने एक्सेप्ट करना था अपनी बहुत रिसर्च के बावजूद भी, ढूंढने के बावजूद भी, वो अनअकाउंटेड फॉर है, अनट्रेसेबल है, हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए और हम उसके सामने अपने बिल को प्रेजेंट ही नहीं कर पाए. जब उसे प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे तो वो क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा कि एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई. तो एक्ट ये प्रज्यूम कर रहा है कि अगर आप अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी ड्रॉई को ट्रेस नहीं कर पा रहे, वो अनट्रेसेबल है, then it means he is not ready to accept, and that will be presumed as non-acceptance dishonor. So if the drawee is not traceable, then it will be deemed as dishonor by non-acceptance. ठीक है. और इसके अलावा एक और लास्ट केस कि कई बार जिस पार्टी को ड्रॉई बनाया गया है या जिस पार्टी के नाम से गुड्स खरीदे गए हैं और ड्रॉयर उसी के नाम से अपना बिल रेज कर रहा है, उसी को ड्रॉई बना रहा है, लेकिन वो ड्रॉई एक्चुअली में फेक पर्सन था, फिक्टिशियस पर्सन था, यानी कि आपने किसी फेक पर्सन के नाम पे बिल रेज करा हुआ है या आपसे ऐसा करवाया गया है. तो अगर ड्रॉई ए फिक्टिशियस पर्सन है, फेक पर्सन है, then obviously you will not be able to trace him, and then it the such bill of exchange will be deemed to be dishonored on account of non-acceptance, on account of non-acceptance. ठीक है. So whenever there is a dishonor by non-acceptance, then there is no liability that has been created on such bill of exchange. So such instruments will never be presented for payment, and there won't be any question of dishonor by non-payment. So the question of dishonor by non-payment arises for promissory note and check because they are always created without any acceptance, and in case of bill of exchange, the dishonor by non-payment will arise only if there is a valid acceptance on such bill of exchange. And valid acceptance will always be when there is an unqualified signed acceptance by the drawee on the instrument itself, not on any additional paper, but on the instrument itself, whether on the face of it or on any part which is a part of the negotiable instrument. Only then we can say it's a valid acceptance, and only after a valid acceptance will a bill of exchange may be eligible for, we should say, dishonor by non-payment. So when we move for dishonor by non-payment, so there is two things that normally whenever there is a dishonor by non-payment, so there is a question of maturity. So some negotiable instruments will mature only after sight. That is, their term defined is not fixed, and it is mentioned that once you show us, then it will mature.
and others can be that they will be time bill. So we can always use the word time bills and site bill. This bill is negotiable instrument. So there are two kind of instruments: time negotiable instruments which have a fixed maturity, and site negotiable instruments that which will mature after the site. So which are the instruments which are site instruments which they need to be presented for site, and those which are time instruments they need to be presented on maturity. So once the instruments are presented for site or after their maturity, they are due for payment, and it is the responsibility of the liability holder, or it is the right of the holder to receive the payment on such negotiable instruments. So in case of bill of exchange, drawee should pay, and the drawer has the right, or the holder has the right to receive the payment. In case of promissory note, the maker should pay and the holder have the right to receive the payment. And in case of check, the bank, the drawer's bank. So normally when we use the word check, because it is a pre-accepted bill of exchange, so there is no need for further acceptance. Therefore, check is a kind of special bill of exchange which does not require any acceptance. So whenever the check is being given, that is the person who is liable to pay, that is the drawer. He has already directed the bank to pay the amount to the holder. So in case of check, the bank will pay. In case of promissory note, the maker will pay. In case of bill of exchange, the drawer, which has become the acceptor, will pay. So the after the instruments have been presented for site or for payment after maturity, they needs to be paid. And if there is any default on behalf of the drawer or the maker or the bank due to whatever reasons, and the instruments are not paid, then we say that it is a dishonor by non-payment. So we always say that if the promissory note or the bill of exchange or check is not paid, the payment is declined on such instruments, then such instruments are deemed to be dishonored by non-payment, because they were deemed to be paid and they are not being paid. And whenever there is such dishonor, a notice of dishonor needs to be served. So whether there is a notice, or whether there is a dishonor by non-acceptance, or whether there is a dishonor by non-payment, the notice of dishonor shall be served by the holder to such defaulting party, so that the legal action can be initiated against the defaulters, and proper damages can be claimed for such loss which may have been incurred, that could have been incurred, and then the defaulter will be liable to pay for such damages. So this dishonor is one of the key factors which makes the negotiable instrument act strong, because if the defaulters for dishonor are not penalized, then it will liquidate the basic purpose of negotiability, and that will destroy the overall purpose and usability of negotiable instruments. So there should not be any dishonor of any kind in the negotiable instruments, and if there is any case, then there has to be strict action to be initiated against the defaulters, so that the instruments act is not liquidated for its implications. Okay? So once, or if the instruments have been dishonored and the notice have been served, okay, so we can say that in some cases this notice is necessary. So the cases where the notices are necessary are to be noticed, are to be noted down, so that we don't miss those cases where if we fail to fulfill the notice of dishonor, that can result in losing our right to enforce for claim of damages. Okay? So normally, if there is a promissory note which has been marked not negotiable, so if there is a not negotiable promissory note,
then if it is dishonored, then there is no need to serve any notice of dishonor because it was not negotiable. It means the defaulter already knew that he has declined the payment because he knew to whom he had to pay. And because there is no payment deducted from his account, either intentional or because of some other reasons, then there is no need to serve any notice of dishonor. So what the point is, it is just an example, just a case study कि अगर negotiable promissory note है तो it could have changed so many hands before such promissory note is being paid. And in a normal business, there are so many payments being deducted from the account of the maker, that is the payer. So he could have declined, he could have not noticed कि जिसको मैंने पे करना उसकी पेमेंट हुई कि नहीं हुई. लेकिन अगर एक नॉट नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है, इसका मतलब क्या है, जिसको बना के दिया गया जो होल्डर है सिर्फ वही पेमेंट रिसीव करेगा, उसके अलावा आपसे कोई और पेमेंट रिसीव नहीं करेगा. देन द मेकर इज प्रज्यूम टू नो कि जिसको पेमेंट करने का प्रॉमिस किया था उसको पेमेंट रिसीव हुई है या पेमेंट रिसीव नहीं हुई है. तो अगर नॉट नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट है और वो डिसऑनर हुआ, इसका मतलब इट इज़ एन इंटेंशनल डिसऑनर of non-payment by the payer, by the maker, and hence, if he already knew, then there is no purpose to serve him the notice again, and hence, in such cases, the formality of serving the notice of dishonor has been taken away with. So, in a way, these are the cases where the holder is saved from the formality of serving the notice because the defaulter already knew what he has done. ठीक है. Similarly, a person can intentionally dishonor so that he can use the time of notice of dishonor to his advantage, and when he receives the notice of dishonor, then he can make the payment in that due time. So basic purpose of dishonor may have been or could have been not to deny the payment but to buy time. So in cases where it is presumed that if we go on with the formality of serving the notice of dishonor, then the time lost in serving the notice of dishonor will be used by the defaulter against the holder, then in those circumstances we don't encourage that such time benefit is to be given to the defaulter. So where the time of serving the notice of dishonor will help in benefiting the defaulter, then in such cases there is no need to serve the notice of dishonor, and whenever there is a default by dishonor of non-payment, the holder can directly sue the defaulter for damages and the principal amount that has been defaulted, so that there is no undue benefit to the defaulter. There is no undue benefit to the defaulter. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा एक जो बहुत क्रूशल केस है जो हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं वो है कि एक सेक्शन है सेक्शन 138. ये सेक्शन 138 जो है ये एक स्पेशल केस है जो नॉर्मली डिस्कस करता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट ड्यू टू insufficiency of funds. ड्यू टू insufficiency of funds. ये बहुत कॉमन एक सेक्शन है जो डेली लाइफ में और सिविल केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. उसका रीज़न क्या है कि भाई हम लोग कॉमन लाइफ में चेक्स बहुत फॉलो करते हैं, चेक्स बहुत यूज़ करते हैं. तो आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपने उसको चेक दे दिया. अब आपके बैंक में उतना बैलेंस होगा तो वो चेक क्लियर हो जाएगा, और उतना बैलेंस अगर आपके अकाउंट में नहीं हुआ तो चेक डिसऑनर हो जाएगा. तो अब वो चेक के डिसऑनर होने के एक रीज़न तो है कि आपके फंड्स कम थे. एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि आपके साइन ठीक से मैच नहीं हुए, या कोई डेट गलती हो गई, या कोई ओवर राइटिंग हो गई. तो देयर कैन बी सो मैनी रीजंस फॉर विच द बैंक्स कैन डिसअलाउ द पेमेंट ऑन सच चेक.
So when there is a specific dishonor where the bank is failing to pay the obligation on such a check on the grounds that everything is fine, but there is no fund in available in the bank to pay for the amount mentioned on the check, then it in a way shows intentional default on behalf of the maker of the check to deny the payment which he needs to pay to the holder. And when you are intentionally defaulting on the payment, then there needs to be a strong and faster mechanism to punish the defaulter. And that's where the specific section of 138 comes into play for dishonor of non-payment due to insufficiency of funds for a check. Okay? So what the section 138 says, I will read as per the language of the act. Therefore, I am just reading from the Ware Act here. A drawer of a dishonored check as per section 138 shall be deemed to have committed an offence for which he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, or with a fine which may extend to twice the amount of the check, or with both. यानी कि सेक्शन 138 ने डिसऑनर ऑफ चेक को एक पनिशेबल क्राइम बना दिया जिसमें आपको मैक्सिमम 2 साल की सजा मिल सकती है, और इस सजा को पहले 1 साल था बढ़ाकर 2 साल किया गया है, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई 2000 में। और उसके अलावा आपको जितना चेक की अमाउंट है उससे डबल आपके ऊपर फाइन लग सकता है, और सिर्फ फाइन नहीं, सजा नहीं, दोनों भी हो सकती है। तो इट इज़ विद द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट एज पर द सर्कमस्टांस ऑफ द केस कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंस है या इंटेंशनल ऑफेंस है, या एक कोर्ट किस तरह जज करता है उसको, या दोनों काउंटर पार्टी किस तरह परस्यू कर रही हैं उसको, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस, कि डिफॉल्टिंग पार्टी को 2 साल की सज़ा मिले या डबल फाइन देना पड़े या दोनों मिले। और ये कब होगा? when the check has been dishonored due to insufficiency of funds in the account maintained by him, यानी कि there is a अकाउंट में पैसा ही नहीं है, जितनी अमाउंट का आपने चेक काटा उतने आपके पैसे ही नहीं है अकाउंट पे, तो आपने चेक काटा ही क्यों? और the payment for which the check was issued should have been in discharge of a legally enforceable debt or liability in whole or part of it, यानी कि इसके साथ साथ इनसफिशिएंसी फंड्स तो है ही है, लेकिन जिस अमाउंट की पेमेंट के लिए आपने चेक काटा था वो पे करने के लिए आप लीगली बाउंड हो, यानी कि आपसे जबरदस्ती चेक नहीं कटवाया गया था, आप अपनी एक लीगली एनफोर्सेबल लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए आपने ये चेक काटा था, और उस चेक को काटने के बाद भी आपने उस अकाउंट में अपना बैलेंस नहीं मेंटेन किया। इसका मतलब आप अपनी एक जेन्युइन लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना ही नहीं चाहते थे। तीसरी चीज, the check should have been presented by the payee or the holder in due course within a period of 6 months from the date on which it is drawn or within the period of its validity whichever is earlier। यानी कि जो चेक आपने काट के उसको दिया था, हर चेक की एक वैलिडिटी होती है जो आरबीआई डिसाइड करती है एज पर द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। वो वैलिडिटी 6 महीने भी है, 3 महीने भी है, चेंज करता रहता है, उसके लिए आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पे नोटिस करना पड़ेगा, बट नॉर्मली वो वैलिडिटी 6 महीने है। इसलिए क्या बोला कि आपको चेक की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर उस चेक को प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक चेक काटा है तो आपको उस चेक को काटने के 6 महीने तक उस बैंक में उतना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आपने एक लायबिलिटी क्रिएट करी है जिसकी लायबिलिटी की आपके ऊपर जिम्मेदारी 6 महीने तक है। अगर 6 महीने के अंदर वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो चेक इनवैलिड हो जाता है और आप अपनी लायबिलिटी से बच जाते हो। उसके बाद आप अपने उसके बाद अपने बैलेंस को आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो जो होल्डर है वो, और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, हमने फिर डिस्कस पहले भी किया था होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, कि जो ड्यू डेट से पहले होल्डर बना, जिसने वैलिड कंसिडरेशन दी है, और जो सुओ मोटो बाय डिफॉल्ट जिसके पास गुड टाइटल है, मतलब आपको कोई डाउट नहीं है उसकी ओनरशिप के बारे में। तो अगर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स 6 महीने के अंदर अंदर चेक प्रेजेंट करेगा और वो चेक बाउंड प्रेजेंट किया गया है अपनी लीगल लायबिलिटी की फुलफिलमेंट के लिए, और वो चेक आपका इनसफिशिएंसी ऑफ फंड से डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया,
तो आपके ऊपर या तो 2 साल की सजा या डबल फाइन या बोथ आपके ऊपर अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर चेक बाउंस हुआ तो क्या लिखा है आगे, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स शुड हैव गिवन नोटिस डिमांडिंग पेमेंट विद इन 30 days, ठीक है, फ्रॉम द ड्रॉयर ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डिसऑनर चेक फ्रॉम द बैंक। यानी कि जब ये चेक डिसऑनर हुआ तो आपका बैंक होल्डर को, यानी कि अगर मैं चेक का होल्डर हूँ, मैंने चेक जमा कराया और मेरी पार्टी का चेक डिसऑनर हो गया, तो मुझे बैंक से पता लगेगा कि सर आपका चेक बाउंस हो गया है। और चेक बाउंस होते ही मैं मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर डिफॉल्टिंग पार्टी को नोटिस दूंगा कि सर आपका चेक बाउंस हो गया, मुझे मेरी पेमेंट दे दीजिए। अगर मैंने उसे नोटिस नहीं दिया तो भी मेरी लायबिलिटी कर्स हो जाएगी, तो मुझे नोटिस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। तो ड्रायर इज लायबल ओनली इफ ही फेल्स टू मेक द पेमेंट विद इन 15 days ऑफ सच नोटिस पीरियड। यानी कि जैसे ही मैंने नोटिस सर्व किया तो मुझे 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस सर्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये नोटिस का जो पीरियड है, जैसे ही मुझे बैंक से, यानी कि अगर मैंने जनवरी का चेक था, अभी मार्च चल रहा है, तो जनवरी 2022 का चेक था, मार्च 2022 में अभी 6 महीने पूरे नहीं हुए, तो मैंने मार्च 2022 में जमा कराया, तो वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर जमा करा दिया। जमा कराया मैंने 24 मार्च को, और आज 29 मार्च को मेरे पास नोटिस आया बैंक से कि सर वो आपका चेक डिसऑनर हो गया। तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर, 24 तारीख से नहीं, चेक की डेट से नहीं, चेक की डेट जनवरी की थी, जमा कराया 24 मार्च को, लेकिन डिपॉजिट डिफॉल्ट की नोटिस कब आई मेरे पास, 29 मार्च को। तो आज से 30 दिन के अंदर अंदर मैं अपने ड्रॉयर को, जिसने मुझे पेमेंट देनी थी, उसको, उस बंदे को नोटिस दूंगा कि सर आपका चेक बाउंस हो गया। तो मैं चेक बाउंस के 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस दूंगा, यानी कि 29 मार्च से लेकर अगर आप 30 दिन काउंट करोगे तो ये 27 अप्रैल तक आते हैं। तो 27 अप्रैल तक, 30 दिन तक मैं अपना नोटिस दूंगा उसको कि भाई आपका चेक बाउंस हो गया। मेरे नोटिस देने के जैसे उसको रिसीव होगा, उसके बाद उसके पास 15 दिन का टाइम है। वो नोटिस रिसीव करने के 15 दिन के अंदर अंदर ही विल हैव टू पे। और अगर नोटिस रिसीव करने के 15 दिन के अंदर भी उसने पेमेंट नहीं करी, देन दिस लायबिलिटी ऑफ हिज अराइज, जहाँ पर उसके ऊपर डबल फाइन, 2 साल की सजा, ये दोनों अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हुआ क्या कि मैंने उसको नोटिस दिया और उसने नोटिस जो है वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी। तो अगर नोटिस देने के 30 दिन निकल गए, यानी कि 27 अप्रैल निकल गया, और उसके बाद भी उसने मुझे 15 दिन और निकल गया, मुझे पेमेंट नहीं करी, तो मेरे पास अब मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरे पास कोर्ट में जाने का 1 महीने का टाइम है, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू द एक्सेम्पशंस ग्रांटेड। मेरे पास 1 महीने का टाइम है। तो मैं उस 15 दिन के पीरियड के लैप्स होने के बाद, ये प्रज्यूम करते हुए कि उसे लास्ट डेट नोटिस मिला और उसके बाद 15 दिन का टाइम अगर वो ख़त्म हो गया 13 मार्च को या 12 मार्च को, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर मुझे कोर्ट में अपना केस फाइल करना पड़ेगा, जिस पे मैं अपने चार्जेस को प्रेस करूँगा, उसकी लायबिलिटी शो करूँगा, उसका डिफ़ॉल्ट शो करूँगा, जब मुझे नोटिस और डिसऑनर मिला बैंक से वो शो करूँगा, कब मैंने नोटिस सर्व किया वो शो करूँगा। उससे कोर्ट सारे टाइम लिमिट्स को चेक करके ये परस्यू करेगी कि किस किस तरह से सारी टाइम गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं, और उसके बेसिस पर अगर ये प्रूव हो जाता है कि आई वॉज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स and where all the earlier discussed formalities been fulfilled, तो सेक्शन 138 को प्रेस करके he will be guilty of dishonor of non-payment of check under section 138 for dishonor due to insufficiency of funds, for lawful satisfaction of a lawful debt due to insufficiency of funds, and he will be liable either for double the fine or 2 years imprisonment or both. ठीक है। So this dishonor by non-payment is dishonor in cases of bill of exchange, promissory note and check, all the three, whereas this dishonor by non-payment will be applicable only for bill of exchange. So I hope this discussion was helpful for you, and we will see you again